Freedom or confusion? Yes. Welcome to iGlam Talks. I'm talking about friends with benefits. जहाँ पे फ्रीडम है या confusion है, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. एक ऐसा रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे नो लेबल, नो प्रोमिसेस, लेकिन इंसान के अंदर में आई एम फाइन से लेके फ्रेंड्स विद बेनिफिट का जो जर्नी है उसके बारे में आज बात करेंगे. नाउ वाई पीपल चूज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप? There are two friends, they are physically close, no commitment, no responsibility, no label. लेकिन end of the day, what happens? We are talking about two different human beings. तो emotional involvement हो ही जाता है and there the complication starts. Now, why people choose it? Recent past relationship trauma, they don't want to be alone. They want to explore something without commitment. But end of the day, when two people involve, one or the other becomes more emotional and there the problem starts. Now generally फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में प्रॉब्लम्स आते क्यों हैं? एक ओवर इमोशनल होता है, दूसरा ओवर इमोशनल नहीं हो पाता है. दे ही और शी जस्ट गो विद द फ्लो. सेकेंड थिंग कि एक इमोशनली चीज़ों को आंकता है कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएगा, थिंग्स विल बी ऑन माई साइड, एंड इवेंचुअली जब वो नहीं होता है तो हार्ट ब्रेक से भी बुरी स्थिति होती है. थर्ड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का एक बहुत अनयूजुअल चीज़ है, दैट इज व्हेन टू पीपल चूज टू बी फिजिकली क्लोज, दे डोंट नो वेयर इज द एंड एंड दे कीप ऑन डूइंग इट फॉर देयर कंफर्ट. नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ इट? If both the partners are balanced, they know their emotional strength, they know their do's and don'ts, they know finally these things are going to be end like this, or maybe they have to stay the entire life like this. So if you really want to go for a friends with benefits kind of a relationship, always remember, emotions का कोई भी मापदंड नहीं होता. You cannot control over your emotions, but yes, some or now or later on, you have to understand that friends with benefits को आप एक मजाक में या फिर एक taken for granted में commitment की तरह आप नहीं ले सकते हो. So if you know someone who is actually struggling in their life or being alone or finding some comfort or having a past trauma, suggest her to be good friends with people, not rather running for a friends with benefits kind of a relationship, because emotions are never sellable. And at times what happens, people try to set it up, or people try to cope it up with a lot of other things, which is actually not right for your mental and emotional and definitely physical health. Who you think is that person who really needs help, just help them and ask them. Friends with benefits se better hai if you be our friends and be a part of the family. Thank you so much.